Today we are going to start and continue with chapter number 9, the living organism and their surroundings, session number 7. In last sessions, children, we have discussed about what is habitat, what is adaptation. Then we have discussed about different components of our atmosphere, that is biotic and abiotic. We have discussed about terrestrial habitat, aquatic habitat, right? Then we have discussed about characteristics of living beings. In that we have completed living beings grow. They require different characteristics like growth, reproduction, they require food, then they require excretion, then they require respiration. So all these are characteristics which are found in living organisms. These same characteristics we cannot find in abiotic components. Have we seen any of the non-living things which is respiring, for example table or chair? Are they taking food? No. So all these characteristics are found in living organisms only. So let's continue with our chapter, children. So characteristics of living organisms. In that today we are going to discuss is living beings need food. यानी जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उन्हें फूड की जरूरत होती है. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की जो लाइफ प्रोसेसेस होती है, एनर्जी के लिए भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. समझो कि हम बहुत टाइम से भूखे हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी डाउन हो जाएगी. एज सून एज आफ्टर दैट आवर स्टमक स्टार्ट्स क्रेविंग, यानी हमें भूख लगने लगती है, राइट? एंड आफ्टर दैट वी ईट समथिंग. After eating, children, we get energy to do work. So all living beings need food to get energy to carry out various functions of growth and maintain the body and to fight diseases. अब फूड हमें क्या करता है? एनर्जी तो देता ही है, हमारे बॉडी की रक्षा भी करता है, डिजीजेस से फाइट करने की हमें शक्ति भी देता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ भी देता है. Right, children, when you were small and if you compare your body with today's height and weight, you can see the difference that how much you all have grown, right? So that is the characteristics is living being needs food. Next characteristic is living beings respire. Respire means taking in oxygen, giving out carbon dioxide, right? So inhaling and exhaling is found in living organisms, right? Non-living things we have seen, they do not respire, they do not breathe, right? So let's start with this, children. All living beings use food to produce energy in their body. यानी हम जो फूड खाते हैं वो क्यों खाते हैं? एनर्जी पाने के लिए, right? So oxygen combines with food with their body to release carbon dioxide, right, children? To release कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2. अब खाना जैसे हमारे बॉडी के लिए जरूरत है, वैसे ही ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. समझो कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो हमें सफोकेशन फील होता है, वी कैन नॉट ब्रीथ इजीली. सो दिस ऑक्सीजन व्हिच वी हैव इनहेल्ड, इट गेट्स मिक्स्ड विद आवर फूड. So this is chemical change in which carbon dioxide and water vapor are produced. अब जो respiration process होता है उसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, we are inhaling that and we are exhaling carbon dioxide and water vapors. जैसे कि हमें पसीना होता है, sweating होता है, right? Process of taking in air, letting oxygen combine with food and throwing out carbon dioxide and water vapor is called respiration. Respiration क्या है? Inhaling of oxygen and combining with our food which is giving out carbon dioxide and water vapor, it is called as respiration. The process of breathing in and out is the part of respiration. यानी जो प्रोसेस है, हमारे नोज के 2 होल्स होते हैं, वन होल से हम इनहेल करते हैं और दूसरे होल से हम एक्सहेल करते हैं, right? So in and out of our oxygen and giving out carbon dioxide is called as respiration. They are the part of respiration.
Next characteristics we are going to discuss is living beings excrete. Now what do you mean by excrete? Excrete means throwing out of the body. The process of breaking down food, यानी हमारा जो फूड है उसे हम सिंपलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं, दैट इज डाइजेशन, एंड कंबाइनिंग फूड विद ऑक्सीजन, दैट इज रेस्पिरेशन. क्योंकि जब हम फूड खाते हैं तब भी हम ब्रीदिंग करते हैं. It is not like that. Then when you are taking food, we are not taking in oxygen. So children, what happens when food is taken inside and oxygen is also inhaled inside? So they both gets combined and they are having a chemical reaction, produces waste which the organism need to throw out. अब उसमें से कुछ वेस्ट बनता है वो केमिकल रिएक्शन से, तो वो वेस्ट हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करती है, बॉडी के बाहर निकालती है. सो द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है? जो वेस्ट हम हमारे बॉडी के बाहर निकालते हैं उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं. We and many other animals expel waste from the body in the form of feces and urine. Sweating is also a way of expelling waste from the body. अब हमारे बॉडी के अंदर ये सब जो केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, यानी हम और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो क्या होता है, वो लोग वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं. वो कौन से फॉर्म में एक्सपेल करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फीशेस. Every day we go for washroom, children, right, to clean our stomach. That is also one waste. Second is urine. Urine is also unwanted liquid waste of our body. And sweating. Sweating जो है हमें पसीना होता है, and that sweating is also a type of waste which is given out of the body. So children, I hope you understood about living beings require food, respiration and excretion. In next session children, we will discuss about stimuli which is related to living organisms, that how living organisms react to the stimulus, right? So thank you and have a nice day children.